I would like to welcome the guest of honor, Dr. Nasib Singh Gill, Senior Professor, MDU Rohtak, for some of his words of excellence and experience. Please, sir. Thank you very much. The Honorable Chief Guest of this National Conference on Computing Informatics, Network and Security, Deepa Verma ma'am. Guest of honor, Professor Bharti ma'am, Professor Dr. Anil Kumar Goswami sir, the visionary and vibrant director of Tecnia Institute of Advanced Studies, Professor Ajay Kumar Rathore sir, the learned Dean Academic, Professor M.N. Jha sir, of the dais, head of the department, Dr. Deepak, the faculty members, learned colleagues, and dear students, and the young convener of the conference, Simply Goel ma'am, though my student, yes, okay. So indeed, first of all, I'd like to thank the entire organizing team of this committee of this national conference to get me this opportunity to be part of this inaugural session. At the same time, I'd like to share, rather I am privileged to be part of this wonderful luminaries on dais, and of the dais, all our fellow colleagues, to be there on this occasion of this inaugural. The task assigned to us is quite tough, and it has begun from me. So I think I have to justify that looking at the theme, if you are talking about national conference on what? Computing informatics, if you are talking about just making a dissection of each and every word, that in its own is an ocean, I will be saying. और अगर मैं कुछ ठीक से इसमें कह पाऊँ तो मुझे एक उर्दू शायर की कुछ चंद पंक्तियाँ मुझे प्रेरित कर रही हैं, मैं सभी के साथ समक्ष शेयर करूँ. सकूने दिल से एतमाम तो करूँ, जरा नजर उनसे मिले सलाम तो करूँ. अब उस थीम पे देखिए आप, कंप्यूटिंग इंफॉर्मेटिक्स, नेटवर्क सिक्योरिटी. सकूने दिल से एतमाम तो करूं, जरा नजर उनसे मिले सलाम तो करूं. मुझे तो होश नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, ये फसाना कहां शुरू और कहां तमाम करूं. Sir, indeed, Professor Ajay Rathore sir and Professor Jha sir has already just sensitized you about the thought of the institution to hold this workshop on such a very right theme. But of course, I'm just sharing that before we all came amidst you, we all were just discussing that how the things are moving and how this young generation is taking an idea and moving ahead. That's very important. So I'd be just saying one thing, that how the digital universe has grown today. And what is the takeaway? Because I was just witnessing, yes, out of you, there could be several students, they are still on the mobile. I don't know what they will find out of it today. But yes, no doubt, it's not your fault. The digital universe that has grown today, certainly, it is also a very alarming call for all of us. The huge dependence on our this digital growth. If you are talking about today, the world population goes 7.91 billion.
And out of that, 66% population, they are using internet. 58% of the population, world population, they are using social media. And 62% population, they are using your mobile phones, smartphones. And if you are talking about in context of our country, by the end of, that is 2021 end, out of 1.39 billion population, about 821 million, they were the total internet users. And there was a remarkable growth during this hard COVID-19 times that I think may not be, as per your intuition that it can, but yes, the fact goes around. More important is what, when we are just attending to any course, what is our thought process? Are we just you are aspiring to earn the degree? Will that be enough? No. If you are talking about this 21st century student, they need to acquire 3 kind of skills I would like to mention here. And pertaining to the 3 kind of your domains of knowledge. 1, foundational knowledge, where the core areas, the cross-cutting interdisciplinary areas, and at the top of it, to help it, that is your digital literacy, is very important. This is your one part. Second, the meta-knowledge, that is something great and something very important, that makes your foundational knowledge meaningful in any of the core areas. Maybe you are a student of general mass communication, maybe management, maybe your computing and informatics, or any other discipline. Because that emulates to go for a higher level thinking, creativity, innovation. And unless you innovate, you can't go anywhere. That's very true. So it's very, very important that unless you are creative, you may not be innovative. The third, your knowledge domain is what? That is specific to life skills. It's not necessary that you are earning a degree. At least you are a successful human being, having good life skills. That's very important. And one more very important thing I'd like to make a mention here, pertaining to innovation, pertaining to creativity. I'm just sharing one of the statements of Apple co-founder Steve Wozniak in 2018. He made a statement about Indians. What he says, how do we rate success in India? A student go for a course, earn a degree, practice, get a job, but where is the creativity? I think if you talk about like Sundar Pichai, Satya Nadella, and many more, at that point of time, because Steve Wozniak was dragged into a big controversy, and many people commented like it. But friends, if you just make a very honest analysis of his statement, he was not wrong. And for this, I have certain data to share with you, certain statistics. How do we measure innovation? If we're talking about like in physics, chemistry, sciences, maybe your humanities, maybe your peace, no doubt sometimes we believe, okay, fine. One of the parameters is what Nobel Prizes, the highest winning award world over. Now, let me share, till now, up to our today latest statistics, 896 Nobel Prizes have been given away.
out of which 24 have been given to different organizations. And there are few as well who have earned more than one Nobel Prizes. And if you are talking about like what is the share of population across the globe, what is population of India? Close to 1.4 billion. China, 1.43 billion. What about United States of America? 332 million. That is approximate 33 crores. What about UK, United Kingdom? It's approximately 6.58 crore. What is population of Uttar Pradesh? About 23 crore plus. And you will be stunned to know how many Nobel Prizes goes to credit of the country having your only 33 crore population. 398 out of 896. 398. 139 alone to UK. 111 to Germany, number 3rd. Then goes France, top 4. What about India? 12. What about China? 9. And I think if I could exactly recollect, after 1935, C.V. Raman, for his Raman effect, he got the Nobel Prize. There has been no prize since 1935 in India. Why I am sharing this fact? Because as a part of this Government of India, our senior professor delegation, I happen to be as a part of the leadership program to Cambridge University. You might be thinking, why Cambridge University? If I could share with you, big research, it comes from universities. And thanks to Government of India, as per this NEP, National Education Policy 2020, there have been several, that is your guidelines, which are focusing on inculcating our this higher level thinking, fostering among youth. And it is expected by 2035, gross enrollment ratio for the student, which is declining very speedily in the last around 10 to 12 years, they expect it would reach up to 50%. Do you know that alone to the credit of Cambridge University, there have been 107 Nobel Prizes alone. 107. If you are talking about like seat belt, that we all make use of in all vehicles, it was developed at Cornell University. If you are talking about ultrasound, it was developed at Vienna University. So what I'm trying to pinpoint, and one fine morning session, one of the pro-chancellor of Cambridge University, he came with our electric kettle. And we were just amazed that what the professor is going to demonstrate to us. He told, you see, this kettle, the autocut was patented by them. And you know, the manufacturers, the industries, who are just valuing their idea of this autocut on the steel kettles, that is your that is elastic kettles and others, it is only their brainchild. And that's why they are far, far, far ahead. I'm talking about, and I just particularly would like to share, I happen to this year be part of certain research project at Brunel University, West London, 21 years back. And what was the state of affair of that university at that point of time? Even we have not reached even to this level even till today, though we are NEC accredited A+ grade university of Haryana State, top university of Haryana State. So friends, yes, there's a big deficit. And big deficit is of what? Innovation, creativity. Our rote learning system,
And that's why I'm again just coming back to National Education Policy 2020. So that was the second part of the domain knowledge I was just trying to pinpoint, meta-knowledge. That has to be stronger enough. And I have certain different case studies to help you up. It's not necessary that कि आप एक जॉब करने वाले बने, आप जॉब देने वाले बने ना. Why should not be? Should become entrepreneur. और मैं तो यूँ कहूँगा कि अगर थोड़ा सा अपना रिसर्च में अच्छा काम कर ले तो you go for a big huge establishment. Do you know who is Vijay Shekhar Sharma? Vijay Shekhar Sharma is a CEO of Paytm, who had got an idea only just what for our online recharge for prepaid and postpaid. And he came up with 197 communications in 2010. Today, Paytm karo everybody. And look at the entire empire. So that is the most popular startup of our Indians. Number 2, Ola Cabs. Owned by again what? Bhavish Agarwal from Mumbai. Who also came with our your ride share startup. And look at the model. Customer की बल्ले बल्ले, driver की बल्ले बल्ले, और Ola cab की बल्ले बल्ले. Everybody is in a win-win situation. That is called RW theory of management. Similarly, if I could share with you, it's not like that that we can't innovate, but you simply look at what, okay, how to appear in examination. Friends, not one be examined, but rather learning should be assessed. What did you learn out of that? And that's why outcome-based education. If you are talking about like patents, I was just referring the top 20 your companies, innovative companies who have got patents. 8,594 with the highest it has gone IBM. Close to 8,100 has gone what? Samsung. But don't think they just came of their own. I'm talking about, yes. How many patents? Professor Rathore sir was also sharing that we are also just now, that's your started stressing on our patents and research publications. Certainly we should. And more important is what? Commercialization of the patents. Very important. I'm just sharing one of the experiences by Professor H. Devraj sir, who has been our UGC Vice Chairman, and he was having a one-to-one word with the Prime Minister of India, Shri Narendra Modi. He was just asking about what this our NBA, NIRF ranking and about this NAC accreditation. And he was just, because he had been thoroughly well-versed all this, he said, these rankings are of no use unless we develop our own brand equity. That's very important. So for example, even if you have an idea, there will be lot many sponsors. Dr. Anil Goswami sir was also just sharing that if you need data for image processing, Deepa ma'am was also sharing that even so many different case studies they have already solved in forensic. Friends, there are lots and lots of problems. Where there is a will, there is a way. Very true. I'm just talking about just sharing one of the very famous practice that Google has adopted. Google every year they conduct one Google I/O event that is called Google Innovations in Open. And recent it was just conducted on 11th of May. They nothing but they sponsor people with a brilliant idea from across the globe. There are lot many unsolved problems.
And even on your Google, if you search 7 millennium problems, you will find so many mathematical problems even unsolved. Even like if a hackathon kind of different workshops and events are conducted just to what? Just to help you to come up with our solutions. Solutions for what? Local and regional problems. And as a part of NEP also, it is also believed and also it's just indicated that AICT and UGC, they have moved. That they are developing the different courseware in different, about 31 regional languages. Not only that, local connect, that what are the problems in your day-to-day, your everyday life that you face, and our engineers or developers or entrepreneurs, they come forward with. Second level that I'm just would like to share, that science and technology, normally what exactly is believed, because what is beneficial for the society? If the society is desiring more, should be there, then certainly there should be our research and development workforce that should come forward. I'm reminding you one of the instances around 1990s, rather prior 88, 89, when United States for the first time, they denied supercomputing technology to India. Only then government of India decided to set up CDEC Center at Pune. And as a part of that, Param supercomputer. Now today, more than to 31 countries we are exporting that supercomputing power. Had we been, because necessity the mother of invention. That I'm just sharing with you. So normally when we say what the technology does, your scientific knowledge is deployed through technology. That is getting solution to the society. That is very important. And I would like to make a mention here that since I am also a student and scholar of computer science, what exactly is happening today? You know what is the size of digital universe today? In this age, just like हम बोलते थे रोटी कपड़ा और मकान एक आदमी की जरूरत होती है, उसके साथ साथ एक डेटा भी ऐड हो गया. 1.5 GB डेटा पर पर्सन पर डे होना ही चाहिए. और सिर्फ इतना ही नहीं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट, एक समय होता था जिस टाइम आई एम टॉकिंग अबाउट इज जस्ट वी आर रिमाइंडेड ऑफ आवर ओल्ड डेज ऑफ अबाउट लेट 80s and early 90s. वो when our this internet came into existence, सही आपका जन्म इंटरनेट का कब हुआ? 1995 में, जब आपका www वर्ल्ड वाइड वेब आया. और सही मायने में वर्ल्ड वाइड वेब, जब तक एक अच्छी कनेक्टिविटी ना हो, ये सभी लोगों का परसेप्शन था ये वर्ल्ड वाइड वेब नहीं, इट इज अ वर्ल्ड वाइड वेट. और सच्चाई भी थी. आई एम सिंपली टेलिंग यू फ्रेंड्स, if you just make an assessment of today's your futuristic computing technologies, मैं दो चीज शेयर करना चाहूंगा. दो तरह की टेक्नोलॉजी होती हैं, एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी और एक सस्टेनिंग टेक्नोलॉजी. और पहली बार आपका जो डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी शब्द जो डिसरप्टिव यूज किया गया, दैट वाज यूज्ड बाय एम क्लेटन ऑफ ए हार्वर्ड प्रोफेसर. डिसरप्शन का मतलब मैं थोड़े सरल शब्दों में बताना चाहूंगा आपको. पोस्ट ऑफिस में जाके कहीं कोई चिट्ठी लिखने के लिए कि आपको कोई लिफाफा खरीदते हो, आप कोई कार्ड परचेज करते हो? नहीं ना. मेरे ख्याल में हमारे जितने भी सीनियर साथी हैं, वो पीला कार्ड, वो ग्रीन कार्ड, आर्मी पर्सनल एक आपका ग्रीन कार्ड अलग से होता था. दैट वाज ऑल डिसरप्टेड. किसने सोचा था कि आपका जॉन एंड एक्टन व्हेन दे इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ दिस व्हाट्सएप, कि व्हाट्सएप इतना बड़ा स्वरूप लेगा. चार अहम चीजें हैं आज के टाइम में अगर आपको डिजिटल यूनिवर्स की ग्रोथ में जिसमें बहुत बड़ी मदद की है. योर सोशल मीडिया, योर मोबाइल, योर एनालिटिक्स, और चौथी चीज क्लाउड कंप्यूटिंग.
और मैं आपको बताना चाहूंगा थोड़ा सा, अगर आंकड़े आपसे शेयर कर पाऊं, पिछले 7-8 साल के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका मोबाइल ट्रैफिक में जो ग्रोथ बढ़ी है, करीब करीब 222% के आसपास बढ़ी है। ये मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं आपका 2021 तक की। इट्स नॉट द प्रेजेंट डे, इट मे हैव गॉन इवन बियॉन्ड। अगर आप ये कहोगे कि आपके एम्बेडेड सिस्टम में आपका डेटा कितना बढ़ा है, करीब करीब 4 गुना। अगर आप ये कहोगे क्लाउड के ऊपर डेटा कितना गया है, मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स। एंड इट इज बिलीव्ड कि 2035 तक more than 70% of the companies, they will be shifting their data onto your hybrid clouds. These are the real statistics I'm sharing with you. और मैं जरूर अपने यंग साथियों के लिए मैं 2-3 नाम लेना चाहूंगा। प्रणव मिस्त्री का नाम ले रहा हूं आपके सामने। प्रणव मिस्त्री is just a 41-year guy who came from a very humble background, having studied in a very मीडियम इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ आनंद इन गुजरात, जिसने इंजीनियरिंग किया, और आज के दिन कहां पे है? सैमसंग जो आपका रिसर्च ग्रुप है उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। सैमसंग का एक सैमसंग टेक्नोलॉजी रिसर्च ग्रुप है जिसको स्टार के नाम से जानते हैं। ही इज द हेड ऑफ इट, 41 साल की एज में। अब आप ये कहोगे सर उसने ऐसा क्या किया? उसके नाम 5 पेटेंट्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पेटेंट जिसको हम आज बड़ी एक ईमानदारी से और बहुत एक प्राउड के साथ यूज करते हैं, जो आपका गूगल मैप के ऊपर हम स्टैच और आपका उसको करते हैं, दैट इज हिज ब्रेन चाइल्ड, जिसको बोलते हैं 6th सेंस टेक्नोलॉजी। और आप ये मान के चलेंगे आपने कैसे उसने, हाउ ही दिस योर कॉइन्ड द आइडिया। जो हमारे पास पुराने माउस होते थे, जो आपके एक हार्ड सरफेस के ऊपर रोलिंग बॉल वाले, तो फिजिक्स वाले साइंस वाले बच्चे जरूर जानेंगे कि आपका वो उसको मूव करने का मतलब है कि प्रोपोर्शनली आपके पास स्क्रीन के ऊपर उसका मूवमेंट करना, दैट इज ए 2 डायमेंशनल स्पेस, और 3D के अंदर मूव करना। उन्होंने आपका सिर्फ उसका कंट्रोल अपनी फिंगर पे लिया, यहां पे आपके पास कैमरा लगाया, यहां से आपका एक ओवरहेड प्रोजेक्टर, सिर्फ आपको उसने क्या किया, जितने भी आपको जो डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हम ब्राउजिंग कैसे कर सकते हैं, मैं यहां से कुछ कर रहा हूं, व्हाट इज दिस, आई एम ब्राउजिंग द डिजिटल वर्ल्ड। इस ऑब्जेक्ट को यहां से आप कर रहे हो, यहां से वहां कर रहे हो, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मूव थ्रू ए कमांड, ओनली विद योर ह्यूमन जेस्चर यू कैन परफॉर्म इट। जब उन्होंने सैमसंग में ज्वाइन किया, सैमसंग का एक मॉडल है गैलेक्सी गियर, इट इज हिज ब्रेन चाइल्ड अलोन, अकेले। सो थिंक ऑफ इट, क्या नॉवल आइडिया आपके पास नहीं आ सकता? आ सकता है। एक दूसरा नाम और बता रहा हूं मैं आपको, जस्ट अराउंड 2.5 years बैक, अर्नव कपूर। अर्नव कपूर इज ऑल्सो पर्सन फ्रॉम इंडियन ओरिजिन बट वर्किंग विद MIT। उन्होंने एक डिवाइस डेवलप किया, अल्टर ईगो। और अल्टर ईगो आपका यहाँ पे कान पे लटकता है, और यहाँ पे इट स्टिक्स टू फेस, और चिन यहाँ पे आपका थोड़ी तक आपका यहाँ पे सरफेस। आप ये कहेंगे क्या करता है? स्पीच रिकॉग्निशन इज नॉट ए रॉकेट साइंस, वो बोलता भी नहीं है। दैट अल्टर ईगो डिवाइस कैन व्हाट, रीड आउट द ब्रेन सिग्नल्स। मैं सामने देख रहा हूं कि आपका कोई बच्चा मोबाइल पे कर रहा है और मैं कुछ इशारा कर रहा हूं, तो इट विल अनाउंस। मेरे पास घड़ी नहीं है और मेरा ब्रेन ये कहता है मुझे टाइम पता होना चाहिए, मेरे पास डिफरेंट गैजेट्स हैं, इट विल अनाउंस इतना टाइम हो गया। थिंक ऑफ इट, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प पीपल। So what I'm simply trying to convey, yes, I have seen students even only undergrad courses in those developed universities who are not going over this through our rote learning system and examination. They are doing even par excellence with our high-end research, who are not even doing our PhD students in India. That is very true, because I have spent a lot of time. I happen to get an experience opportunity to interact with so many universities across different countries, and this is what I'm exactly I'm just happy कि आप हमारे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारी जो चीज़ें आई हैं, और प्रोफेसर झा सर, आई थिंक
अपने IIIT दिल्ली के जो पहले अपने पंकज जलोटे डायरेक्टर थे, उन्होंने एक बुक भी लिखी है कि यूनिवर्सिटीज़ में भी 2 कैटेगरी होनी चाहिए, एक टीचिंग कम रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ और एक सिर्फ और सिर्फ रिसर्च यूनिवर्सिटीज़। ही रोट ए बुक और मेरे ख्याल में बहुत कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी भेजी है, मेरे पास भी कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम हिम। तो यस, बट आई एम टॉकिंग अबाउट फ्रेंड्स, अगर आप ये देखेंगे ना कि हम कहां तक कितने महफूज हैं, कितने सिक्योर हैं। मैंने आपको 4 चीजें बताई, आपके सोशल मीडिया, मोबाइल, एनालिटिक्स, क्लाउड की इकोनॉमिक्स क्या है? वेरी सिंपल, आप और हम आपके नॉर्मल कमोडिटीज हम यूज करते हैं, सब्जी, पानी, बिजली, ये सारी चीजें। कंप्यूटिंग इज ऑल्सो व्हाट वन ऑफ द एसेंशियल कमोडिटीज टुडे। तो जरूरी नहीं आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर आपके एंड पे हो। इफ यू हैव टू अवेल इट, यू हैव टू हैव व्हाट? 2 थिंग्स, स्मार्टफोन एंड सेकंड, good internet bandwidth. That's it. What else? You're different. Through apps, you can browse the world. You can avail any kind of services. So what I am trying to indicate, data is the new oil and artificial intelligence is the new electricity. I am quoting, artificial intelligence the new electricity. This statement was coined by what? Andrew Ng. जो आपकी गूगल ब्रेन है, गूगल की एक सब्सिडरी ब्रांच है गूगल ब्रेन, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड सभी प्रोजेक्ट्स को डील करती है। उसके सीईओ हैं, उसके हेड हैं कौन? एंड्रू एनजी बेडू। आप ये कहेंगे बेडू कौन है? ही इज अ पर्सन हैविंग 2 सिटीजनशिप, वन फ्रॉम चाइना, अनदर फ्रॉम यूएसए। और ये वही शख्स है जिसने चाइना का आपका जो ब्राउजर है बेडू, क्योंकि चाइना इज दे डोंट अलाउ मोजिला, फायरफॉक्स एंड गूगल एंड अदर ब्राउजर्स इन द कंट्री, ओनली दे यूज देयर ओन कस्टमाइज, एंड दैट इज व्हाट? बेडू। इट इज हिज स्टेटमेंट एंड व्हाट ही सेज, आने वाले समय में जब हम बात कर रहे हैं कि आपका हमारा स्मार्ट वर्ल्ड होगा, हमारा स्मार्ट होम होगा, हमारा स्मार्ट इंस्टीट्यूट होगा। यस, एक टाइम होता था उससे वी यूज टू प्रीफिक्स, मेल के आगे लगा दिया ईमेल, टेक्स्ट के आगे लगा दिया ई, कॉमर्स के आगे लगा दिया ई कॉमर्स। देन इट मूव टू व्हाट? मोबाइल, एम कॉमर्स, एम लर्निंग। बट नाउ इज द टाइम व्हाट? टू प्रीफिक्स विद व्हाट? स्मार्ट। बट व्हाट रियली मेक्स स्मार्ट? अनलेस you and we are smart, we should not expect any activity is going to be smart at all. और इसलिए मैं डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज के अगर मैं नाम लेने लगूँ आपके पास, आप मुझे बताएं टाइपराइटर क्या आज के दिन कोई यूज करता है? ऑल डिस्प्लेस्ड। और मुझे बताइए आप में से जितने भी बच्चे बैठे हैं, जितने सभी, आप में से किसी के पास नोकिया का फोन है? नहीं। वाई? अगर यही चीज मैं आज से 9 या 10 साल पहले कह रहा होता तो मेरे ख्याल में लार्जली यू वुड हैव हैड नोकिया। वाई? Reason is very simple. Unless the company didn't move with innovation in time into their processes, you cannot excel. So we have to align our processes. और इसलिए मैं एक चीज और कहना चाहता हूं, yes, industry process और industry revolution IR 4.0, और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि अगर जब हम इंडस्ट्री रेवोल्यूशन 4.0 की बात कर रहे हैं तो इंडस्ट्री IoT की भी बात करेंगे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। छोटा सा उदाहरण आपके लिए, जस्ट आई थिंक मे बी आर अराउंड हार्डली 1.5 मंथ 3D प्रिंटिंग को यूज करते हुए सिर्फ 22 दिन के अंदर चेन्नई के अंदर आपका घर बन गया। घर बन गया 22 दिन में, दैट इज, वो तो ठीक है, लेकिन सोच सकते हैं कितनी कॉस्ट पे? 60% ऑफ द टोटल कॉस्ट जो अदरवाइज उसकी वैसे लगाई होती। तो अब मुझे बताओ 40% कॉस्ट कटिंग बाय मींस ऑफ 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इवन इन दिस वन अलोन एरिया। और ये नहीं मैं कह रहा कि सिर्फ कंस्ट्रक्शन, आई एम टॉकिंग अबाउट, यस, आवर 3D प्रिंटिंग हैड रिवोल्यूशनाइज्ड द एंटायर इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल।
और इसके अलावा उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 में फॉर व्हाट हैज बीन फ्यूल्ड बाय व्हाट, हम रोबोट्स की बात करते हैं। रोबोट्स एक नेक्स्ट स्टेप और है, कोबॉट्स, कोलैबोरेटिव रोबोट्स, जहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत हो आप यूज करें, अदरवाइज रोबोट्स विल डू। और मुझे बताने की जरूरत नहीं, अगर आपके पास मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज से 35 साल पहले हमने भी सब्जेक्ट पढ़ा था, हमने भी बुक्स, अगर आप ये कहोगे कि आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जॉन मैकार्थी इन अराउंड 1960s, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीनिंग सही मायने में अगर आप चरितार्थ हुआ है वो अब, रीजन इज वेरी सिंपल, डेटा साइंस हैज रीच्ड टू दैट लेवल। और मैं आपको जो डिजिटल यूनिवर्स का साइज बताने चला था, आपके करीब करीब 76.4 जीटाबाइट्स, जीटाबाइट्स का मतलब हमारे पास 76.4 इंटू 10⁻70 बाइट्स, ये साइज है आपके डिजिटल यूनिवर्स का। और इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा आपको कुछ और बतला पाऊं रिगार्डिंग आवर द नेक्स्ट कंप्यूटिंग पावर, सुपर कंप्यूटर तो भूल जाइए आप। You know which one is the fastest supercomputer today? Frontiers, developed by United States. But earlier it was from Japanese, Fugaku. और मैं क्यों बता रहा हूं, इसलिए आप जो आज के दिन सोफिस्टिकेटेड सुपर कंप्यूटर है और क्वांटम कंप्यूटर को जरा कंपैरिजन करना एक बार। IBM came up in December 2021 with its own quantum computer जिसका नाम था IBM Eagle। और you know उसकी आपकी टोटल 127 क्यूबिट्स, और अब 2022 में दे हैव प्रोनाउंस्ड कि दे विल बी कमिंग अप विद अराउंड अबाउट टू 10 टाइम्स। आपके 427 क्यूबिट्स का ऑलरेडी आ चुका है, बट व्हाट दे हैव प्रोक्लेम्ड कि आपका और आने वाले टाइम में आपके जो पहले वाला जो मॉडल था उसको जो अपना नाम दिया है IBM क्वांटम सिस्टम नंबर 2, दैट विल बी 10 टाइम्स ऑफ देयर फर्स्ट वन। और मैं ये बताना चाहता हूं उसकी स्पीड कितनी होगी। जो आपका फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है आज के दिन का, उसके 958 मिलियन टाइम्स। और थोड़ा सा और इसमें आंकड़े बता दूं कि एक प्रॉब्लम जो आपका सुपर कंप्यूटर, जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर आज सॉल्व कर सकता है और जिसके लिए उसको 10,000 साल लगेंगे, उसको यही क्वांटम कंप्यूटर सिर्फ 4 मिनट में आप सॉल्व करने की क्षमता रखता है। जो मैं आंकड़े बता रहा हूं इनको क्रॉस वेरीफाई करना, 4 मिनट में। जरा सोच सकते हैं आप। इसका मतलब आने वाले समय में सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे और भी। अगर आप ये कहें ना तू डाल तो मैं पात, आप ये कहेंगे यस, साइबर क्राइम की दुनिया में भी आपका हम कहां बढ़ रहे हैं, बहुत आगे। बट यूनाइटेड स्टेट्स इज टॉप with 23% of the cyber crimes. We as a country, we are at number 11 with 3% of the cyber crimes. Yes, we also have to keep an eye onto security also. और इसलिए सिक्योरिटी के बारे में मुझे जरूर मैं 1-2 पंक्ति जरूर कहूंगा। माझी तेरी कश्ती के तलबदार बहुत हैं, कुछ इस पार और कुछ उस पार बहुत हैं। जिस शहर में खरीदी है तुमने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। तो मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूं, साइबर सिक्योरिटी आज के दिन सबसे बड़ा चैलेंज है। और साइबर सिक्योरिटी के अंदर अगर आप ये देखते हैं कि आपके पास कितना एक एम्प्लॉयमेंट है, वंडरफुल, बहुत इंपॉर्टेंट। और इसके साथ में यह भी चीज कहना चाहता हूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग,
डीप लर्निंग, ये आने वाले समय में सबसे इंपॉर्टेंट डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी सिद्ध होने वाली हैं। और एक खास चीज में, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट वेरी लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स, अनदर एरा ऑफ सॉफ्टवेयर 2.0 इज गोइंग टू स्टार्ट। और सॉफ्टवेयर 2.0 क्या है? जहां पे आपके इंजीनियर्स को कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग ऑटो एडजस्ट करके अपनी कोडिंग करेंगी। दैट इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट डोमेन। So with all these words, I'd just like to convey to all of our young students, ये कहते हैं ना कि आपका रामकृष्ण परमहंस के तो शिष्य भाव थे, और मेरे ख्याल में अगर मैं कहूँ स्वामी विवेकानंद was also one of those who enlightened the world। तो इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा, यस, आपका और हमका सबका अवतार हुआ है, और मेरे ख्याल में आप अपनी जितनी मेहनत करके और एक ठीक पॉजिटिव माइंड थॉट के साथ और एक सकारात्मक तरीके से मेहनत करके अगर आप कुछ इनोवेटिव आइडिया के साथ बढ़ेंगे, दैट इज गोइंग टू रिवार्ड यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।